ओपीएससी सोशियोलॉजी रे भल मार्क पाइबाकु चाहुछंती कि ताहेले आजिर ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सोशियोलॉजी आज साइंस को शेष पर्यंत निश्चय देखो। तो आज आम पढ़ा इन व्हाट सेंस सोशियोलॉजी इज ए साइंस एक्सप्लेन। तो ऑगस्ट कंटे द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड प्रो फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म advocated that society should be studied using the scientific method. Thus, sociology is a science as it follows a systematic, empirical and objective approach to study social reality. कौन कहला ना अगस्ट कमिटे समाज विज्ञान जनक एवं पॉजिटिविज्म प्रवर्तक से कहिथिले जे समाज को वैज्ञानिक पद्धति व्यवहार करी अध्ययन करा उचित। एथिपाई समाज विज्ञान एक विज्ञान कारण यह सामाजिक वास्तवता को अध्ययन करने एक व्यवस्थित अनुभव जनित एवं वस्तुनिष्ठ आभिमुख्य अनुसरण करे। तो नेक्स्ट देखिबा सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो सोशियोलॉजी एज ए साइंस इन द सिस्टमैटिक स्टडी, एम्पिरिकल नेचर, ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वेरिफिकेशन एंड रेप्लिकेशन, generalization, cause effect relationship, predictive capacity. फास्ट देखिबा सिस्टमैटिक स्टडी। तो सिस्टमैटिक स्टडी में कौन करें ना यूजेस ए लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। तो एक युक्तियुक्त एवं वैज्ञानिक पद्धति व्यवहार करे एवं पर्यवेक्षण, श्रेणीकरण और विश्लेषण उपरे आधारित। नेक्स्ट एम्पिरिकल नेचर। तो यहाँ कौन ना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस स्टडीज रियल सोशल फैक्ट्स। तो पर्यवेक्षण एवं प्रमाण उपर यह आधारित एवं वास्तव सामाजिक तथ्यर अध्ययन करे। तो नेक्स्ट रहा वेरिफिकेशन एंड रेप्लिकेशन, जहाँ को आम कह जांच एवं पुनरावृत्ति। तो फाइंडिंग्स आर टेस्टेबल एंड रेप्लिकेबल। नेक्स्ट एन्श्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ नॉलेज। तो फलाफल परीक्षण योग्य एवं पुनरावृत्ति योग्य ज्ञानर विश्वसनीयता सुनिश्चित करे। तापर देखिबा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी रे कौन कहला ना रिसर्च शुड बी वैल्यू न्यूट्रल, मिनिमाइजेस पर्सनल बायस। तो गवेषणा मूल्य निरपेक्ष हेबा उचित एवं व्यक्तिगत पक्षपात को कम करे। तो नेक्स्ट देखिबा जेनेरलाइजेशन। जेनेरलाइजेशन बा साधारणीकरण। तो डिराइव्स जनरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम सोशल फैक्ट्स और हेल्प्स एक्सप्लेन वाइडर सोशल पैटर्न्स। तो सामाजिक तथ्य साधारण सिद्धांत बाहर करे एवं व्यापक सामाजिक प्रक्रिया बुझाइबारे मध्य सहायता करे। तो नेक्स्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन्स काजुअल लिंक्स बिटवीन सोशल फेनोमेना। एग्जांपल जेमती कि पॉवर्टी, देन अनएम्प्लॉयमेंट, देन क्राइम। तो सामाजिक घटना मध्य कारणगत संपर्क बुझाए। तो नेक्स्ट प्रेडिक्टिव कैपेसिटी। तो प्रेडिक्ट्स सोशल ट्रेंड्स फ्रॉम पास्ट डाटा। तो अतीत तथ्य सामाजिक धारा भविष्यवाणी करे। प्रेडिक्शन आर प्रोबेबिलिस्टिक नॉट एब्सोल्यूट। तो भविष्यवाणी संभाव्य संपूर्ण नुहे। तो नेक्स्ट रहा हमारा साइंटिफिक मेथड्स इन सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट एमती रहा ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट हाइपोथेसिस, नेक्स्ट डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन, वेरिफिकेशन, टेस्टेड अगेन। तो नेक्स्ट देखिबा कंपैरिजन नेचुरल साइंसेस वर्सेस सोशियोलॉजी। तो प्राकृतिक विज्ञान वर्सेस समाज विज्ञान। तो ये हमर कौन कहला ना फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, नेचर, मटेरियल थिंग्स। तो ये कहला ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप। तो ये कौन कहला ना भौतिक वस्तु, प्रकृति, वस्तुगत जिनिस। ये हमर मनीष, समाज बा सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन लैबोरेटरी। तो परीक्षागार रे नियंत्रित परीक्षण। ये फील्ड मेथड्स सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। क्षेत्र पद्धति सर्वे, साक्षात्कार, पर्यवेक्षण। ये हमर एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल लॉज। तो सठिक एवं सार्वजनीन नियम। ये हमर प्रोबेबिलिस्टिक लॉज नॉट एब्सोल्यूट। तो संभाव्य नियम संपूर्ण नुहे। रहा कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल। तो संपूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव।
ଏଠି ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା କଷ୍ଟକର। ଏଠି ହାଇଲି ପ୍ରିସାଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଏଠି ହେଲା ଲିମିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବିଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ତ ସୀମିତ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଏଠି ହେଲା ଇଜି ରେପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ସହଜ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଷ୍ଟକର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିମିଟେସନ୍स और क्रिटिसिज्म। तो ह्यूमन बिहेवियर इज कम्प्लेक्स डायनामिक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, तो मानव व्यवहार जटिल गतिशील एवं अनेक कारक द्वारा प्रभावित। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो संपूर्ण वस्तुनिष्ठता बजाय रखिबा कष्टकर। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, तो नियंत्रित परीक्षण संभव नहीं। सोशल फैक्ट्स भ्यारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, तो सामाजिक तथ्य स्थान रु स्थान एवं समय रु समय को भिन्न होता है। देयरफॉर सोशियोलॉजी इज नॉट एन एग्जैक्ट नेचुरल साइंसेस बट इट इज ए साइंटिफिक सोशल साइंसेस, तो एथिपाई समाज विज्ञान एक सठिक प्राकृतिक विज्ञान नुहे किंतु यह एक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान। तो नेक्स्ट देखिबा कंक्लूजन। तो सोशियोलॉजी is a science because it uses the scientific method, relies on empirical evidence, seeks generalizations and aims at objectivity. Though it cannot achieve the precision of natural sciences due to the complexity of human behavior, it remains a scientific social sciences। तो समाज विज्ञान एक विज्ञान कारण यह वैज्ञानिक पद्धति व्यवहार करे, अनुभव जनित प्रमाण उपर निर्भर करे, साधारणीकरण खोजे एवं वस्तुनिष्ठता लक्ष्य रखे। मानव व्यवहार जटिलता जोगु यह प्राकृतिक विज्ञान सठिकता हासिल करि पारे नाही, तथापि यह एक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान रही थाए। तो वीडियो भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। तो नेक्स्ट टाइम सोशियोलॉजी रो सबु सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक सब हमें कवर करिबा। थैंक यू।